पार्ट। ट्री माने आपका जो हम हिंदी में जानते हैं पेड़। क्या इस पेड़ से क्या समझते हैं? पेड़ से हम क्या समझते हैं? जिसकी कैनोपी बहुत वेल डेवलप्ड हो, जिसमें स्टेम में नीचे ब्रांचिंग ना हो लेकिन ऊपर जाके ब्रांचिंग हो, जिसमें टैप रूट सिस्टम हो इन डेप्थ, उसमें रूट सिस्टम डेवलप्ड हो। और ट्रीज क्या है? अक्सर हमको कहीं पर आप लोग नोट कर सकते हो दैट 100% ऑफ द ट्रीज एंड 100% ऑफ द एनुअल्स, these are propagated through seeds only. Only the commercial method of propagation is seed. बीज द्वारा ही ये होता है। तो एनुअल्स और ट्रीज में क्या डिफरेंस है? एनुअल आपका वो है जो अपना लाइफ साइकिल विद इन अ सीजन खत्म कर लेता है, और ट्रीज क्या है? दीज आर पेरेनियल इन नेचर which live year after year and give commercial flowers or yield or the fruits, whatever the commercial product it gives year after year and complete life cycle in many years. Now, if you see your presentation, then trees which are used in landscaping, here you have to take care that while selecting trees in terms of landscaping, you have to take care of all the details of the trees along with the season, the flower color and the functional part like architectural uses. अब architectural uses में क्या है? मान लो तुम्हारे पास छोटा सा गार्डन है और तुम्हें उसे सजाना है। Proportion of the area of the garden which is available to you. If it is small, then you have to go for the selection of small trees. If the compound is large, then go for the large trees. And if it is medium, then go for the medium height trees. We have to take care of the view also, that we have to plant the taller trees at the back side, followed by medium, and at the front the smaller trees. And if it is if it is not unidirectional, say it is multi-directional, then you have to plant the tallest tree in the middle, followed by the periphery of the middle height tree, and at the front or at the outer circle you have to plant smaller trees. Suppose there is some enclosed canopied space, then you have to, if it is an enclosed canopied space, then it should be enclosed on side characteristics of the forest condition. या फिर vertical space है, then you have to go for the narrow planting material. Now, suppose if I am asking you that in front of a gate, main gate of your house, or in front of the say outer side of your house, which type of trees would you like to plant? Then your answer should be weeping type of trees. Weeping मतलब जिनकी लीव्स अशोक की ट्रीज की जो लीव्स होती हैं जैसे वो वीप कर रहे हो नीचे की तरफ हो, या फिर आपने बॉटल ब्रश देखा होगा केसुआ, तो उसमें भी आपको क्या करना है कि उसकी भी लीव्स नीचे वीपिंग होती हैं। इस तरीके के प्लांट्स आपको गेट पे या अपने घर के कंपाउंड की आउटर वॉल के आगे लगाने हैं। क्यों लगाने हैं? Because weeping type of trees give a grating effect. What are the other functional uses of the trees? See, in landscaping, the most functional part is screening also. Screening means either to create privacy from the outer world to the inner part of the house, you have to screen it. Or if you are having some undesirable part like some pit or some house inside the compound of your house and you want to screen it like a storehouse or something else, then again these screening plants they play a very important role. So they unattractive objectives or scenes, these are just blocked through screening. Then another thing I told you, privacy. So it can be enriched with different types of trees, shrubs. By the way, I should tell you the difference in between trees and shrubs also. See, trees are branched at the upper side of the canopy, while shrubs start branching from the lower part of the stem. Number two, that shrubs
are often, 90% of the shrubs are often propagated by cuttings, whereas 100% of the trees and annuals, they are propagated through seeds. Another very important thing is that trees, these are seasonal in flowering, whereas most of the shrubs, they flower throughout the year. Both are, the common thing is that both are perennial. The height, in terms of height, number 4, in terms of height, the plant height of trees is 4 meter or above than 4 meter, whereas shrubs, they are in between 2 to 4 meter. So, another 5th example of difference is you can quote 2 examples of trees and shrubs if differentiation is being asked. So please, from next class or from this class only, if you want to write the extra points, then please start writing in your the things which we are talking in between. And the propagation part is very important, which is being asked, and I have already told you it is the seed in case of trees and annuals, and in shrubs 90% is through cuttings, whereas 10% is an option which is either through tree, through cuttings or through layering. So that I'll deal with the shrub part tomorrow in time. Then another important function is the shelter belt and windbreak. So these are the group of trees which protect against prevailing winds. Now, another term which comes in our garden is the specimen tree. This is also being asked. What is a specimen tree? So specimen tree is a tree with some peculiar traits or peculiar characters, like Araucaria. Monkey puzzle देखा होगा, तो उसमें कुछ leaves एकदम velvety होगी, थोड़ी सी fluffy होगी, और it is grouping and the angles is horizontal, looking like a inverted umbrella. तो स्पेसिमेन ट्री में कुछ ना कुछ ऐसी खास बात होगी, जैसे कैल्स्टिमोन लैंसियोलेटस. अब इसमें क्या है, बॉटल ब्रश बोलते हैं इसको, और इसके फूल जो निकलते हैं, इट इज लाइक बॉटल ब्रश विच इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग बॉटल्स. देन मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा, it is having it is a sweet scented tree, and it is having big leaves, and a very appearance is very unique. Then Plumeria alba, these are pagoda trees जिसको बोलते हैं. So these are having some unique characters. Now if 2 mark question is being asked that what is a specimen tree, then I'm not going to quote here that you have to quote examples also. You have to write at least 2 examples with all the definitions. Now next slide if you open, then see Casuarina equisetifolia. It is weeping in nature. Weeping means greeting in nature. Something, it is greeting either the outsiders, or it is just giving a greeting or some etiquette of your family. Then this brownie eriza, different canopy. See, it is the spreading canopy, the slide number 3, slide number 4. Then if you see the third one, then it is Semenia salmon. This is commonly known as rain tree. Now if you can see, it is like an umbrella. The canopy is like an umbrella, and this is a moisture loving plant. Then the fourth one is Ravenlelia madagascarens. It is a traveler's palm. The leaves are looking like banana tree, but it is a quite bigger one and a spreading one in nature. And one of the tree is near your boys' hostel also. This is traveler's palm. So these are these are with some unique characters. So this is known as the specimen tree. If it is in your garden, then this is the matter of the pride that you are belonging these unique trees in your garden. Now next picture is of the shelter belts, which act like a windbreak or the dust break and just give protection. Now another function is the landscaping. Landscaping is always integrally attached with the aesthetic part. So visual qualities here come, and the feelings out of that. What is the visual is that giving your eyes a relaxation, a mind to your relaxation? Is it just releasing good hormones by acting different parts of your brain?
So this is the aesthetic part, and the above all the environmental part, which we are just feeling today. The most of the problems like pollution, dust pollution. So for dust pollution, you have to put some plants with some bigger leaf area, which is having a leaf area is quite big, and these are the, or some small part also like शीशम और Ficus bengalensis या फिर Polyalthia longifolia जो अशोका बोलते हैं. एक चीज मैं आपको बता दूं, ये पॉलीअल्थिया लॉन्जिफोलिया जो पॉलिएज ट्री है, ये आपका अशोक है, लेकिन अगर सीता अशोक का क्वेश्चन आता है डीडीए में या आपके और किसी एग्जाम में, तो इट इज तारका अशोका. It is having red flower tree which flowers in summer, and the family is totally different, which I'll be dealing in coming slides. तो you have to take care कि पॉलीअल्थिया को अशोका लिखा है तो कहीं सीता अशोक को भी अशोक ना लिख देना. Then reducing noise pollution, and this is the main feature of some schools where children are there, small children, kids are there, or the play schools where noise is very much. So this is also help in reducing the noise, like by planting at the peripheral of the institute or building with neem plant or saptaparni, which is known as Alstonia scholaris, या फिर Butea monosperma जिसे हम पलाश कहते हैं, या फिर Peacock tree Erythrina variegata. तो इन सब ट्रीज से क्या होता है, आधी आवाज एब्जॉर्ब होके खत्म हो जाती है जो नॉइज पोल्यूशन होता है, और बाहर वालों को भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, और अंदर भी शोर शराबा कम सुनाई देता है. Then climate control, of course, जहाँ ट्री होगा तो that will be 5 degree or 4 degree centigrade cooler than the other than the surrounding environment. And erosion control, of course, noise control was there. Then soil erosion is controlled. Good branching, deep root system, it just binds the soil. And wildlife habitat in case of the forest. Then recreation, you have to just is related to relaxation, or if the lawn is there and trees are quiet, then you can hold parties. Then emotional rejuvenation, again related to relax. Then lower heartbeat, lower BP means normal BP, and other related problems we are just getting rid of. Just through meditation, the greenery is related to meditation, that you must have already read in your Japanese garden, in which greenery and water and tea gardens, these are related to the meditation part. Less color is there. Then again, if we broadly classify the trees, then again in landscaping terms, the tree is either the shade tree or the flowering tree. So shade trees means which are having ornamental foliage, less or no flowers, and it is for shade purpose. Whereas flowering trees, they bear showy and ornamental flowers. Now this is the next slide is having table, which is I have just included only the few trees which is important from examination point of view, and few trees you have to mug up which will be just dealt in different landscaping part. These are repeatedly used in one place or the other place. So the most common tree is the pagoda tree, which is Plumeria, and it just flower in March and April, and somewhere you can write the flowers are of white in color. Then Plumeria alba, this is also at the same duration. Then Jacaranda mimosifolia, नीली गुलमोहर बोलते हैं. Red गुलमोहर is something else, पीली गुलमोहर is something else, and नीली गुलमोहर is something else. इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है. तो जैकरेंडा मिमोसिफोलिया आपकी नीली गुलमोहर का फैमिली भी अलग है, और ये भी गर्मियों की ही फ्लावर है. देन स्पोथोडिया कंपैनुला, जिसको हम बोलते हैं फाउंटेन ट्री भी गर्मियों का ही है. मिलिंगटोनिया हॉर्टेंसिस, जिसको जैस्मिन ट्री बोलते हैं. तो यू शुड नो द कॉमन नेम, सीजन एंड कलर ऑल्सो. लेजिस्ट्रोमिया फ्लॉस रेजिनीस को हम प्राइड ऑफ इंडिया या क्वीन फ्लावर भी बोलते हैं. इसकी पिक्चर भी अभी हम तुमको दिखाएंगे. तो अगेन इट इज समर एंड खरीफ क्रॉप. देन ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलाश, जिसको बोलते हैं गर्मियों का है.
Bahunia purpurea, गुलाबी कचनार, Bahunia variegata, simple कचनार, and Bahunia acuminata, white कचनार. ये बहुनिया का क्या है, जुड़वा लीव्स होती हैं. जब आप लीव को फोल्ड करेंगे तो ऐसा लगेगा एक डिजाइनर कार्ड खुल रहा हो, जो टू फोल्ड्स में होता है. तो बहुनिया की यही खास बात है. देन केसिया स्पीसीज, ये भी बहुत सारी हैं. एक तो अमलतास पीली कलर का आजकल खिला हुआ है, तो ये फिस्टुला है, लेकिन बहुत ही कम ड्यूरेशन का होता है ये. देन से नोडोसा इज देयर, पिंक वन, एंड अल्बा इज देयर, व्हाइट वन. देन एरिथ्रेना इज कोरल ट्री. डेलोनिक्स रीजिया, ये तुम्हारा लाल गुलमोहर हो गया, जो लाल कलर का गुलमोहर खुलता है. नीली गुलमोहर जैकरेंडा मिमोसिफोलिया, और ये व्हाइट गुलमोहर डेलोनिक्स इलाटा. ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. फिर करंज और पादुका ट्री जो है, कनक चंपा, टेरोस्पर्मम एसिडिफोलियम और कैलिस्टमम लैंसटिलोटस की बात अभी हमने बॉटल ब्रश की थी. अब पिक्चर्स अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो पलाश का पिक्चर देखिए, किस तरीके का पलाश का फूल होता है. बॉटल ब्रश का भी दिखाया हुआ है, कैलिस्टमम लैंसटिलोटस का. देन नेक्स्ट स्लाइड, प्रोक्लोस्पर्मम स्पीसीज, दिस इज जैकरेंडा, नीली गुलमोहर जो अभी बात कर रहे थे, मिमोसिफोलिया. फिर ये माइकेलिया चंपका, दिस इज द रेन ट्री, सामानिया समन, and the flower is also there. Then fountain tree, Spothidia campanulata, Tabibia rosea. Now some foliage tree, if we talk about some common foliage tree, the first one is the Ashoka. Then Putranjiva roxburghii, it is like Ashoka only weeping form, and like Ashoka only its look. Then Tamarindus indica, which is Imli, Acacia, this is one of the fodder crop. Then Melia, मीठी नीम इसको बोलते हैं, आकाश नीम, मेलिया इंडिका. देन यूकेलिप्टस, यूजीनिया, जामुन भी आ गया कुछ. Some with little plants with the lower heights, which flowering nature we are just putting in front. So these are the double row planting. Then in double row planting, see some examples are being given of heterogeneous planting, like Peely Gulmohar. This is Peltophorum pterocarpum, which is not covered earlier. Peltophorum pterocarpum is Peely Gulmohar, followed by Delonix regia, which is red Gulmohar. Then Cassia fustula, which is Amalthas, and Delonix regia, again red Gulmohar. So there is a combination of red and yellow, because these are in the sum of the contrast part. Then Jacaranda mimosifolia, this is Neeli Gulmohar, and Revelia robusta, this is some with the yellowish part and the green part. So again, this is giving a contrast color. Then spreading or tall trees, this is again the contrast behavior of the trees. Then in informal, we can follow any of the more of the any kind of pattern, but in an asymmetry way. Now, if we see the roadside planting, then roadside planting we can go for the mixed plantation. Mixed plantation, like we can go for one species for a say up to 10 kilometers, then another 10 kilometers with next species. So this is a mixed type of plantation, in which the advantage is that we can get several things with several say at various seasons, and there is no monotony. Suppose you are traveling in a highway and you are seeing just one type of trees, then this is quite boring, because after that some color variation or some canopy variation should be there, so that by sitting in your particular seat you can enjoy the outer world with different types of trees and different types of landscaping nature. Then group planting is there. In group planting, what happens? 3 to 4 trees of same species, they are planted at specified interval by giving gaps. Now, one of the best feature of the highways, I will be again taking a class on the highway, that if you are just following a single species for a
longer distance up to 10 kilometers, then it is easier for the industries to approach that plant. Suppose there is a medicinal plant, then one can extract the oil or some pharmaceutical compound at a larger scale. Second thing, when you are also moving and the trees are moving relatively opposite to you, or then what happens, 10 kilometers is not a big place, it is not a very long distance. So you are just traveling and the trees are also having a relative motion. So the thing is that you should also have some time, and 10 kilometer or 20 kilometer is a time in which this is not a long time when you are moving in a faster vehicle, either in rail or bus. So this we have to follow, and the schemes given by as per the Randhawa. Randhawa was one of the great landscapist who was an Indian landscapist, and he did main work in Punjab and Haryana. So as per his color schemes that we talk about, then planting trees, amaltas and red gulmohar. This provide color, but the thing is it shouldn't be mixed. Like amaltas species up to some duration, up to some distance, then followed by gulmohar. Because if you plant one tree and one tree of amaltas and one tree of gulmohar, then it will be a very ugly when you will moving fastly, and it will be just mix of the colors. So you have to follow a particular species up to particular distance, then you have to switch over to the next species so that it may look more beautiful. Like Pili Gulmohar and Colvia racemosa. Again, Gulmohar is yellow and the red one is Colvilla. Then the third is Blue Gulmohar with the Grevillea robusta. This is again a blue-yellow combination. You keep on moving the slides. Then scheme number 4 is in May-June, that is Cassia nodosa, which is pink color, and Cassia marginata, again light pink in color. Now, this is the monotonous scheme in which different shades of a single color is being used. We talk about contrast, we talk about monotonous, and the third scheme is analogous. Like the 12 color of your nursery wax color box, which you used to do. There are 12 colors, so we are switching from the light color white to light pink to pink to dark pink to red to maroon to brown, and then to black. That means you are switching over from one lighter shade to the darker shade, and this is analogous scheme. Then coming to the scheme number 5, which is again orange scarlet scheme. This is also monotonous because the shade switching over is there. Then February March scheme number 6 is purple, white, light magenta, and light pink in color. Then if we talk about the roadside tree, then this is मोनो मीन सिंगल माने यानी तुमने मान लो जैसे कि आजकल पार्टीज का थीम होता है पिंक पहन के आ गए, तो पिंक में आपके अलग अलग शेड्स होंगे लेकिन कलर सिंगल रहेगा, दैट इज पिंक. नाउ व्हाटएवर द स्कीम 5 and 6 I talked you, like orange and red, which is just switching over to the color. This one is monotonous, means pink, single color. Now if we are talking about color scheme number 6, like use of two types of trees, one is of orange and another is of red. तो ऑरेंज और रेड अब कलर दो हो गए, यानी उनमें शेड्स का अंतर हुआ, यानी आप लाइटर शेड से डार्कर शेड पे जा रहे हो. समझे? छोटे बच्चे रहे होगे तो अपने 12 कलर्स बस याद रखिए, 12 कलर्स वो याद रखिए, और 12 कलर्स के उस बॉक्स को याद रखिए. तो उसमें आप व्हाइट से अगर लाइटर शेड से स्टार्ट करेंगे, व्हाइट से लाइट पिंक, डार्क पिंक, रेड, मरून, ब्राउन, और द डार्केस्ट इज ब्लैक. यानी एक पर्टिकुलर लाइट कलर से आप कलर स्विच ओवर करके जब इधर उधर डार्कर साइड में जाएंगे, देन दिस इज एनालोगस.
मोनोटोनस, एनालोगस। अब कंट्रास्ट वो है, ये तो तुम्हें पता ही है कि कंट्रास्ट होता है येलो और ब्लू, येलो और ग्रीन, रेड एंड व्हाइट। जो कंट्रास्ट कलर है, जैसे मान लो हमने डबल रोज लगाई ट्रीज की, पीछे हमने ग्रीन का फॉलिएज लगा लिया और उसके आगे हमने लगा दिया कोई लाइटर शेड येलो, या ग्रीन के आगे हमने रेड कलर के फ्लावर्स लगा दिए डबल रो में। तो दिस इज कंट्रास्ट स्कीम। अब स्कीम नंबर 1 देखो, मई की स्कीम है, जो मई में फ्लावर करते हैं, अमलतास और गुलमोहर। तो गुलमोहर तुम्हारा लाल कलर का हो गया और अमलतास तुम्हारा येलो कलर का हो गया, तो हो गया ना कंट्रास्ट स्कीम। अगर दो तरीके के आगे पीछे फूल लगा रहे हो, आगे पीछे ट्रीज लगा रहे हो, या मान लो तुम 10 किलोमीटर तक रेड ले रहे हो, फिर ये ऑरेंज ले रहे हो अगले 10, या कोई और कलर ले रहे हो, तो ऐसा भी तुम्हारे 2 कलर स्कीम्स हो गया। और मे बी कि 2 रोज में भी तुम ले रहे हो आगे पीछे, पीछे वाला पेड़ थोड़ा लंबा होगा जिसके फूल भी दिखाई दे, और उसके आगे वाला पेड़ थोड़ा छोटा होगा उसके भी फूल दिखाई दे, यानी डबल आपको कलर्स दिखाई दे। देन कलर नंबर स्कीम नंबर 2 पे आओ, ये है तुम्हारा गोल्डन, येलो एंड ऑरेंज। नाउ दिस इज एनालोगस because yellow and orange red is something very near wavelength color, जिसमें पीली गुलमोहर, ये पेल्टोफेरम फेरुजिनम और कॉलविलिया रेसमोसा, ये 2 ट्रीज इस्तेमाल किए हैं। फिर स्कीम नंबर 3 में अप्रैल में आओ। अगर अप्रैल में हमने फूल की कोई लैंडस्केपिंग करनी है तो वी हैव यूज्ड अगेन जैकरेंडा मिमोसिफोलिया व्हिच इज ब्लू गुलमोहर एंड रिवेलिया रोबस्टा व्हिच इज येलो कलर। नाउ कलर नंबर स्कीम नंबर 4 पे आओ। इसमें तुमने क्या किया है, मोनोटोनस कलर लिया है मई जून में, जिसमें लाइटर शेड्स, देखो गर्मियों में हम लाइटर शेड्स के ट्रीज और फ्लावर्स यूज करते हैं, तो मई और जून में हमने क्या करा, केसिया नोडोसा जो डार्क पिंक है और केसिया मार्जिनेटा जो हल्का पिंक है, यानी एक ही कलर के शेड्स को यहाँ मोनोटोनस अप्लाई किया। देन अनदर स्कीम इज आपने एरिथ्रेना इंडिका रेड कलर का और नीलोटिका को ऑरेंज कलर का ले लिया है, तो ऑरेंज एंड रेड अगेन एनालोगस। And the 6th number is you are using mauve, white, magenta, pink, so many colors are being used, so this is contrast in nature. You are using the Bahunia variety of Bahunia, you are using different varieties, different species which are having different types of color, then you are using the contrast color scheme. अपना आप लोगों के पास वो होगा सिलेबस, उसमें पहले ही लिखा है कि ट्रीज का क्या यूजेस है, कैसे हमको उनको प्लांटिंग स्कीम करना चाहिए। तो दीज आर द प्लांटिंग स्कीम, लाइक वी आर फॉलोइंग ऑल द 3 पैटर्न्स ऑफ द कलर एंड वी हैव गिवन द समर प्लांटेशन। अब आगे अगर हम बात करें तो एवेन्यू ट्रीज जैसे कि जो रोड की तरफ आते हैं, तो इसमें पलाश, पार्किंसोनिया, टिकोमा, बहुत तरीके के प्लांट्स हैं। सैंडी कहीं पर रेतीली होती है, तो वहां पर रेतीली के लिए क्या करना है, जहां रेत, जैसे राजस्थान हो गई, तो शीशम का इस्तेमाल, या पार्किंसोनिया या अकेसिया जो फॉडर का प्लांट भी, जहां पर पेड़ पौधे कम होते हैं राजस्थान साइड, तो अकेसिया जो फॉडर प्लांट है वो लैंडस्केपिंग का भी काम करेगा। यही अगर कहीं पर मिट्टी बहुत सलाइन हो गई है, खराब हो गई है, अल्कलाइन हो गई है, तो अकेसिया, केसिया या पहाड़ी पीपल जिसको थेस्पेसिया पॉपुलिनिया बोलते हैं, या अर्जुन या फिर बेर के प्लांट्स लगाने चाहिए। ये 6 प्लांट्स मैंने आपको करे हैं। और शैलो रूट सिस्टम के लिए, मान लो जैसे तुम्हें सिटीज में प्लांटिंग करनी है, तो नीचे तो तुम्हारा जा रहा है टेलीफोन का तार का सिस्टम है, उसे भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ऊपर है पुरानी सिटीज में पूरा तार का जाल बिछा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी तारों का, उन्हें भी नहीं डिस्टर्ब करना है। तो यहाँ पर हम शैलो रूट सिस्टम वाले डार्क ट्रीज लगाते हैं। इसके भी एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने अगले में स्लाइड्स में दे रखे हैं। थॉर्नी ट्रीज हम कभी नहीं लगाते हैं, ना हाईवेज में ना ही सिटीज में, क्योंकि थॉर्नी ट्रीज के अगर कोई भी फल गिरेगा या उनके कांटे गिरेंगे तो वहां टायर्स वगैरह पंचर होके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ हम थॉर्नी ट्रीज या शैलो रूट ट्रीज हाईवेज में रिकमेंड नहीं करेंगे। जरा सी हवा चली और वो रास्ता खराब हो गया, रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया। फिर यहाँ पर हाईवेज में आप लगा सकते हैं स्प्रेडिंग क्राउन्स के भी ट्रीज हम नहीं अलाउ करेंगे, हम टॉल ट्रीज अलाउ करेंगे हाईवे में जो लंबी ऊंचाई वाले हो और फास्ट ग्रोइंग हो। तो थोड़ा सा इसमें रोड साइड प्लांटेशन का थोड़ा बताया है, इसके लिए हम अगला भी क्लास लेंगे।